Hello students. Today let us begin with the part 2 of chapter 16, that is Introduction to Biotechnology. In this part we are going to cover the topics of tissue culture, agritourism and agribusiness. So students, we all have studied about the various concepts related with the tissues, types of tissues, what are the different types of animal tissues and plant tissues. Now, after going for that topic, it was found that some of the cells they have the ability to grow into new organisms, and if they are given proper environment, then they have the capacity to form a new organism. This type of cell is known as totipotency. Now with the help of totipotency, it was possible to have the wide varieties of high yielding crops, new species of animals and various vaccines which could be produced. And this has led to a rise of a new branch in biology which is known as biotechnology. Now, this branch of biotechnology, it brings about the improvement in the living organisms by artificial genetic changes, and it also for the welfare of the human beings. So this is altogether known as biotechnology. Now with the help of this biotechnology, it can be used for the production of cash crops, improvement in the varieties of cash crops, then increase in the ability of plants to withstand environmental stress, vaccine production and early diagnosis of various types of diseases. So students, with the help of totipotency, we can cure lot many things. Now let us study the diagram which is shown here. The diagram, it shows how the various processes takes place in the tissue culture. Now this tissue culture, it is having a source plant. Now from the source plant a bulb is taken out. Now this bulb is given the primary treatment. Then after primary treatment the cell starts growing. So they starts multiplicating. Then the shoots and the roots of the growing cell, it comes out. Then it becomes a प्राइमरी हार्डनिंग, जिसे हम हिंदी में रोप कहते हैं, कि बाद में उसमें से हम नए प्लांटलेट्स निकाल सकते हैं. एंड देन विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी हार्डनिंग वी कैन गेट द न्यू वेराइटीज ऑफ द प्लांट. नाउ दिस टाइप ऑफ system is taken place out of the body, so it is known as ex vivo growth of the cell, and complete organism can be produced from the single cell. So in this way it is one of the factor which is having wide application in the field of biotechnology. Now let us begin. Now with the help of biotechnologically plants, we have new varieties which are known as genetically modified plants, genetically modified crops. Now with the help of biotechnology, new varieties can be produced. So introducing the changes which we want in the desired fruit, we can have the new GM crops. These new GM crops, that is genetically modified crops, they will withstand the environment. Excessive drought है, famine है, उसको वो withstand कर सकता है. Then it will have the resistance to the pest, pathogens and the weeds, so which are destroying the crops at the very high rate. So such disturbance can be avoided with the help of GM crops. Also these GM crops are found to improve the nutritive value. Nutritive value जो है उसका वो improve करता है, and there is a decrease in the loss of crop. पहले किसान लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी because there was a heavy loss in the crops. But now with the help of genetically modified crops, we can reduce all these burdens on the farmers. Some of the examples of GM crops are given. For example, maize, MON 810, MON 863. Then potato is having Arm flora as a new GM crop.
Rice, golden rice is the GM crop. Now coming to soybean, so Visitive Gold, tomato Vaishali, and cotton, that is BT cotton. So they are all the modified varieties of the crops which are already present with the new varieties, new strengths and new characteristic. Now coming to the next topic, that in this tissue culture, it can be used on a large scale flowering plants and fruits. तो हम बहुत सारी वेराइटीज़ जो डिमांड में होती है उनमें हम फ्लावर्स जैसे होते हैं, हॉर्टिकल्चर जो कहा जाता है, वो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. दे कैन बी ग्रोन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि हमने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है, तो ड्यूरेशन पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड. ऑल्सो द लार्ज प्रोडक्शन कैन बी डन विदाउट पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन. हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो की जाती थी, और ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें हम पॉलिनेशन और जर्मिनेशन, इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So here now a large scale production can be done with the help of tissue cultures. Now in bioreactors with the proper nutritive medium हम large production of plantlettes जो होते हैं, यहाँ आपको फर्स्ट फिगर में दिखाया है किस तरह से बायोरिएक्टर्स काम करते हैं. तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स को हम हाई रेट में, हाई स्पीड में ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो मेंटेन किया जाता है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए फेवरेबल होगा. उसके बाद लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद द मिनिमम रिसोर्सेज, यानी हमको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हम लार्ज प्रोडक्शन कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन गेट द डिसीज फ्री एंड वायरस फ्री प्लांट्स बिकॉज दे आर genetically modified. We don't want the insecticide and pesticide to affect our plant, so we will have the calculation at the genetic level and they will be disease free and viruses free. Then the embryos which produced by the tissue cultures always completes their growth. So यहाँ पे इस तरह से ये प्लांट्स जो होते हैं ये पूरी तरह से उनकी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं. पहले के इसमें जो ट्रेडिशनल प्लांट्स होते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स होती थी, उसमें क्या होता था, बहुत सारा प्रोडक्शन वेस्ट हो जाता था. सो नाउ दिस विल नॉट हैपन अगेन. नाउ ऑन द सेम लाइन यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिए हैं फ्रूट ट्री से रिलेटेड, सो एग्री टूरिज़म. अब ये एग्री टूरिज़म क्या है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट लैंड अवेलेबल है along with the farming, then we can have the good business which is known as agri tourism. सो अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट्स, हम इनको बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हम इनको टिश्यू कल्चर टेक्निक से कर सकते हैं. और ये पूरी तरह से जब फुल्ली ग्रोन हो जाएगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग्रो टूरिज्म सेंटर्स कैन बी डेवलप्ड. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ various types of tissue cultures which can be done for the flowering plants. Now here you can some people yes, so they are again, if sufficient quantity, various examples which can be included in this type of agrotourism is the mangoes, chicus, guavas, then shade loving local or exotic attractive plants. They can be used here. Ornamental plants can be used, they can be shown. Then butterfly garden, it can be set up. Medicinal plants, organic vegetable and fruits, they can be grown. So people visit such places with the attraction in large number, and उसको आप सेल भी कर सकते हो, सीडलिंग्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, and you have a quite profitable tourism. So you can have benefits from all these things. So now let us go for the other type of agro complementary occupation. Means along with the agriculture we can have varieties of occupation. So these are known as agro complementary occupation. साल भर एक बार अनाज तैयार हो गई है, एक बार हमने उसका सीडिंग कर लिया है, तो फिर फार्मर्स दे हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. Under such condition they can go for the
other types of occupations. So the definition of agro-complementary occupation is occupations that are linked with agriculture and general supplementary incomes for the farmers. They are known as agro-complementary occupations. इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। अलग अलग तरह के काउज बफेलोज को रियर करके हम मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और जो मेल बफेलोज होते हैं उनको हम हेवी लोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल वैरायटीज़ होती है जैसे सहीवाल है, सिंध है, गीर है, और उनकी एक्सोटिक वैरायटीज़ है जैसे जर्सी है, ब्राउन है, इन्हें भी हम रियरिंग कर सकते हैं, इन्हें भी हम पाल सकते हैं। सो इनके इसमें हमें थोड़ा सा प्रॉपर केयर लेनी होती है। अंडर दी क्लीन एटमॉस्फेयर वी हैव टू keep them, we have to take care of their health and other hygienic conditions. So it is a totally profitable affair along with the farming. उसके बाद we can see the different types. सेकेंड टाइप दैट इज़ द पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? तो रियरिंग ऑफ एग्स एंड मीट यील्डिंग चिकन in the farm is known as poultry farming. So along with the farming we can have both the types. So the objective of this poultry farming is to have the new varieties from the cross between the Indian varieties such as Asil, exotic varieties like the Leghorn, and they will produce the new quality chickens in large number. And also we can have the ability, they can develop the ability to withstand the high temperature and to use byproducts of agriculture as poultry feeds. आप इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम एग्रीकल्चर में एज अ मैन्योर वी कैन एड इट. So some of the best examples are shown here. So Rhode Island, New Hampshire, Plymouth Rocks, Black Rocks, these are the varieties of the chickens which are reared for eggs as well as meat. So students, there are some difference between the layers and the boilers. Layers क्या होते हैं? So they are the chicken which are reared for the eggs only. So they lay the eggs and that is how they have got the name layers. Whereas boilers क्या होते हैं? They are the chickens which are raised for the meat. तो उनका डाइट अलग होता है, उनको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है और इस तरह से उसको फिर सेल करके उसमें से हम प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं. Now the other type of agro-complementary occupation which is mentioned in our book is the sericulture. अब हमें पता है कि जो सिल्क वर्म होता है वो एक टिपिकल प्लांट्स पे ही ग्रो होता है. वी ऑल्सो आर अवेयर विद द life cycle of the moth that it is having the 4 stages. Here the 4 stages of this eggs are given here. So eggs first they get converted into pupa, after larva, then after larva they get converted into the pupa and then the adult moth. तो ये साइकिल हमें पता है. तो सिल्क थ्रेड कहाँ से निकाला जाता है? फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ देयर सलाइवरी ग्लैंड्स. जब लार्वा स्पिन होता है वो अपने सराउंडिंग में थ्रेड बुनता है और वो ककून फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इस प्यूपा स्टेज में आने के बाद इट इज़ हैविंग द ककून फॉर्मेशन स्टेज. सो 10 days बिफोर द प्यूपा टर्न्स इनटू एन एडल्ट. सो ये दो जो स्टेजेस दिखाई है आपको, इन दो स्टेजेस के बीच में वो ककून फॉर्मेशन करता है. सो ऑल द ककून्स विच आर फॉर्म दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉइलिंग वाटर and due to the boiling water the pupa dies in the cocoon and the silk fibers they become loose. So these fibers they are then unwounded, they are processed and they are real, and we can get the varieties of fabrics which can be woven from this type of silk thread. So this is the another agro complementary occupation. I hope you all have understood it. Thank you very much.